Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran's Virtual Academy. This is English mentor Imran Khan. Students, recommendation lectures की सीरीज में खुशामदीद. इंग्लिश लेक्चरर प्रिपरेशन, इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो लेक्चर्स हमारे ये सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको सिलेबस ब्रेकडाउन बता रहा हूँ. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल पोइट्री का जो ब्रेकडाउन था उसमें कौन से राइटर्स थे और कौन से वर्क्स थे उनके पढ़ने थे. सो टुडे आई विल शेयर यू अ लिस्ट ऑफ द राइटर्स, अ लिस्ट ऑफ द वर्क्स and a list of their works which you necessarily need to go through them for the sake of the preparation of your exams. So start करते हैं. रोमांटिक पोएट्री. रोमांटिक पोएट्री होती क्या है? It's a type of a poetry, is a form of a poetry in which writers compose poems without the restrictions of the metrical rules, regulations. They compose spontaneous lines, spontaneous ideas with spontaneity of the themes. They compromise the language rules, the poetry regulations, and the laws of poetic composition. They compose poetry whatever touches, whatever clicks their mind. The themes of their writing are generally the natural settings, the nature itself, the natural exhibitions like sky, river, clouds, rain, desert, ocean, and all those are like sun and the stars, the night and the day, and everything that is related to the nature, obviously the flowers. This is romantic poetry. Romantic poetry very often touches the life of a village, a rural life, village life, a village boy, basically pointing out the life of a children using very easy, cozy, lucid, clear and easy language in the poetry. So this is romantic poetry. Now what you need to study the romantic poets, please note down the list. Before Subscribe to my channel. Same request to subscribe my YouTube channel and share it with your friends who you think will be benefited from these lectures. Thank you. जी, सबसे पहले विलियम ब्लेक तो हम इसको ब्लैक समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं. ये तो ब्लैक कम्युनिटी का बंदा है, इसको क्यों पढ़े. मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में ब्लैक को नहीं मानता था. ब्लैक एक बहुत ही बड़ा पेसिमिस्ट राइटर समझा जाता है और इसी तरीके से इसको एग्जाम प्रिपरेशन भी ऐसे डिलीट किया जाता है. डिलीट नहीं करना, इसको प्लेलिस्ट में आपने रीड लिस्ट में डालना है. विलियम ब्लेक के कौन से वर्क्स पढ़ने हैं जरा नोट करें. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. अच्छा, अब पॉइजन ट्री जरूर पढ़ें इसका. लंदन इसका पोएम है. लंदन 2 पोएम्स है. एक पोएम है वर्ड्सवर्थ का, एक पोएम है विलियम ब्लेक का. विलियम ब्लेक का लंदन जरूर पढ़ें. द टाइगर, TYGER का टाइगर. विलियम ब्लेक को थोड़ी पर्सनल लाइफ भी इसकी पढ़ लीजिएगा आप, इंशाल्लाह तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी. एस्टी कॉलरिज कमाल का राइटर है, सुपर नेचुरल राइटर है, सुपर नेचुरल रोमांटिक राइटर है. एस्टी कॉलरिज वाज अ रिवोल्यूशनरी राइटर एंड फिलोसॉफिकल राइटर एज वेल. एस्टी कॉलरिज राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. एक बंदे की स्टोरी होती है, वो किसी शादी हाल के गेट पे खड़ा होता है और वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछता है. हर इनकमिंग और हर कमिंग गेस्ट से क्वेश्चंस पूछता है और वहां से ये स्टोरी बिगिन होती है और इसको अपनी कहानी बताता है. जरूर पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये. कुबला खान जरूर पढ़े. डिजेक्शन एंड नोट कुबला खान. being Pakistani and sometimes Indian, my friends listen to my lectures, I would recommend them to read Kubla Khan as well. ये 3 इसके वर्क्स बहुत ज़्यादा हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ,
The ruling star, the shining star, the North Pole in the constellation of stars, William Wordsworth. How come we can not remember, we can miss William Wordsworth when it is about the romantic poetry? The Prelude, इसका जो autobiographical poem है, is one of the lengthy, consisting of 14 books. You need to study its plot, and the chapter wise summary or book wise summary would be a good substitution, would be a good job. Tintin Abbey revisited, Tintin Abbey revisited, Ode to Immortality, Ode to Immortality, 3 इसके वर्क्स पर हैं। एसटी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से भी कुछ वर्क्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जब मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के आपको टॉपिक्स रिकमेंड करूंगा वहां पर आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है? ओके जी। द यंगेस्ट रोमांटिक पोएट, लेक पोएट, जॉन कीट्स, उसके क्या पढ़ने चाहिए? वैसे मशहूर तो इसके ऑड्स हैं, लेटर्स भी हैं, लेकिन ऑड्स इसके बहुत ज्यादा मशहूर हैं। कौन से ऑड्स जी? लिख लें। ऑड टू एन ग्रेशनर, ऑड टू मेलनकली, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, ठीक है? ऑड टू ऑटम, हाइपर्शन, ला बेल डेम सेंस मर्सी, ला बेल डेम सेंस मर्सी, ये वक्त आप जरूर पढ़ें, ठीक है? पर्सी बेशी शीली, लास्ट वन, पर्सी बेशी शीली। Out to the west wind, to the intellectual beauty, poems हैं इसकी, शॉर्ट है, ब्रीफ है, इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं आपको खामखा किसी एक बड़े चक्कर में फेंक रहा हूँ, एक आपको बड़ी क्वेगमायर स्ट्रगल में भेज रहा हूँ, नहीं, बट वेरी शॉर्ट पोएम्स हैं, वेरी आपने इंटेलेक्चुअल और क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ने। और क्यूरियोसिटी, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैंने देखना है कि इसके अंदर क्या आइडियाज हैं और इस आइडियाज को मैं कैसे इस तरीके से ऑन कर सकता हूँ, उस पर आइडियाज कैसे मैं फ्रेम कर सकता हूँ। तो इस विजन से पढ़े। और विजन, लेक्चरर बनना तो सबसे ज्यादा विजन है मेरे हिसाब से। आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ, revolutionize your life and bring a positive change in your family, and you're going to influence the society. This is the big motivation, the big vision. I think you need not more ingredients or the more grinding or motivating pack for a study. These are very short works and you need to go through them. To a shylark, to a cloud. ये जी रोमांटिक पोइट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं और रिवाइज करने हैं, याद करने हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर हुआ है तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और कमेंट में भी बताएं कि व्हाट मोर थिंग्स यू नीड टू स्टडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।